Digital megatrends. Okay, Bismillah Rahman Rahim. We did a lot of things last time. Let me see what we have done. We have actually used a data object. We have used the event handling of click me. Okay, this is the event handling that you click, what will happen on a click. Okay, then we have seen the function. We also saw the data object and all. Okay, like we passed the arguments to the function. Then we use the if else also in it. We use it the do while and while loops and for loops and document.write, a lot of things are done, and arrays also. We start also arrays, right? And we see the for in and for off, right? We have seen all those things. Now let us do a few things about the strings. Let me close all of this, whatever that is. Okay, let me close all this. Let's try to see some methods of, let me call it here the function. We're calling the function. Okay, now what in a function I will do is there be brace somewhere or not? Oh, तो नीचे भी बहुत सारा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं. This is if else and switch, I guess. Okay, so we have done switch cases, we have done if else's. Typically this JavaScript is kind of over. Let's say functions also, right? Now we see some array function methods and some string methods, and we also try to see, because yesterday's class we missed, so we try to see how to build the responsive website. Okay, we give some few minutes to that also. Okay, so quickly we start with the strings. Say for example like the string n equals to, say some string n equals to, say for example, why is it wobbling? I'm saying some spaces I'm giving and saying Junaid is teaching, what is this, JavaScript. Okay, there's some spaces also. Now what I want to do is I just want to remove these spaces. There should be any space. Okay, so I could say alert. Okay, then I say n dot trim. Okay, it's not coming here because we need to run it in a console, maybe of a Chrome, and it will come up control S. Okay, if we give it a go, you see there will be no spaces. Okay, if we see only difference between this and here, I first say here alert, and I say give me the n, and then you will see this control S. Damn, I should say terminator and save it. This is the same old thing, right? Now click, the first comes the spaces, you see the spaces, okay, which were there, and next one comes without spaces. Trim removes the spaces. If I want all the capital, if I want what? If I want all capital, I say control alt. It's the same thing, not big things to do, but just for learning purposes. Otherwise it's a simple thing, you can do it yourself आराम से कर सकते हैं. यहाँ पे क्या कहेंगे, to upper, to upper. Okay, to upper, it's a function, so we need to do it like this, control S. Hopefully it will work. I say okay, is spaces, without spaces, and upper is not working. What? N dot to upper, I said. Control S. Firstly save it, let me see it again. Okay, oh, it's not working. So why is it not working? I say n dot to upper. Okay, uppercase, it is upper CASE, control S. Now you give it go. Okay, it's giving all uppercase. Okay, so if you introduce something like a T is for teaching, is like, capital T, capital J is there, S is there, and you want all what? So what are you going to do? To here you want to change to L. It is camel case, huh? Remember that it is camel cases, so L has to be what? L has to be capital. Control S. Uh-oh.
Control S. Okay. So this is with spaces, the original string. Without spaces, capital, small, all small. Okay. Yes, we have a trim also. So if you want to trim it, okay, you want to trim this, you say, I just go here and say Alt, Shift Alt and down. Then I say, for example, trim and dot trim trim. Then I say, what's happening? Arabic language changed to Arabic. Urdu, okay, English. Then I say and dot trim. Okay, this is a function, so use the parentheses, Control S. So now give some. What do you want to trim? Say I will give, say, give me 5. Give me what? 5. I think there is space, a lot of space in front. Let me remove the spaces, or I can use something like, what is happening? Switch off your phones. Control S. 10. Click. Now this is the original. This is without spaces. This is capital. This is small, and this one is actually remove those spaces. What is it? To lowercase. Uh, Trim wala hai na? And dot trim. So what I do here is, for trim, let me first close all of this. Okay. Control this, and I say 10 and dot trim, and I'm giving the value what? Click. So it has removed the spaces actually. Huh? Are these 10 spaces? They are not 10 spaces. So what's happening here? And let me have no space here and see. Okay. Now I'm saying end dot trim, and I say 5. Control S. It's not working. No, no, no. I say end dot trim. Trim means remove. It should start from the 5. Start from what? And maybe I say 5 to 9. Give it 5 to 9. 5 to? It's still not working. Why is not working? What's the problem? Huh? Let me save the camera. Let's write it again. Huh? Let's write it properly. I say alert. Then I say n dot trim. Trim. And I'm giving something like 5 to it. Control S to save it. It's still not working. Huh? Let me open up the Chrome. Google Chrome. I go, how to open that console? I say n equals to, for example, Junaid. Okay. And I say n dot trim. Yes, trim is the same, right? And I'm saying, like, start from the 3. Okay, it's still giving Junaid, huh? Why is it still giving Junaid? What's the trim doing here? Think about it. I'm saying give me, trim it up to 4. 2 to 4. No. So trim is not working. I don't know why. Let us think about it. Why is it not working? Trim, we have to give some values, na? If I say n dot trim, if I give this, what is the answer? It is full. Okay. अच्छा, trim तो हमने पहले trim only spaces. Yes, that's what we have done. We have to do what? Trim तो हमने किया ना already. Yeah, that remove the spaces. What are we doing? This is a trim. It removes only what? Spaces. That's why it was removing the spaces. So we have to do what? We have to slice. Actually, I was in my mind slice, but I was doing the trim. किसी ने बोला trim यहाँ से. We are actually trying to do what? Slice. S-L-I-C-E. Because trim removes the spaces no matter what you put inside. Okay, it doesn't matter. That's why it's given without spaces.
So slice will start from the 5. Okay, maybe yeah, 5. Control S. Basically, in my mind was coming the slice, and I was writing the trim. So D, start from the. Now, if you say 5 to say 9, Control S. So now it gives only between these two. मुझे बता is, मुझे मेरे को सिर्फ is आना चाहिए इसमें से, क्या करोगे? 7 to is 7 to 9 is coming is coming exactly. आगे तो क्या 10, मजाक चल रहा है क्या? ये ऐसे ही बोल रहे हैं 10. Okay, anyways, now if I say, हाँ जी, दिमाग रखें यहाँ पे. Now if I want like I say, if I say like this, just to close this. हाँ, दिमाग रखें यहाँ पे. If I say alert and I say n dot, what is that? What is that, slice? Okay, then I say for example -6. Now what will happen? Or if I say simply -2, so that we can understand. -2. Okay, Control S. I'm getting now. What will happen? -2. Now there is spaces on the back. I want to remove it first. Okay, Control S. Yeah, reverse. It will come from the last. Uh, so -2 gave us with what? It gives PT two words from the back. Okay, it's coming from reverse. जितना आपने दिया उतना, ठीक है ना? If I say -4, Control S. Okay, it's quite obvious now. You understand what's happening? Okay. If I say here, tell me, if I say here, how many are these? I don't know, maybe 30. Give me 30. 30, 30 है ना? Okay. So it gives exactly what it is, right? Okay. Because I told him all, but it came from reverse. It came from, but it doesn't make any sense because अगर सारा ही दिखाना है तो फिर ये बताने की जरूरत है. So reverse. अच्छा, मैं इसमें इसके बदले was करना चाहता हूँ. इसके बदले, so इसके बदले क्या करना चाहता हूँ मैं? Everybody with me? I say alert. What? And then I say n dot replace. N dot. What do you want to replace? I will replace is with the Control S. Now let's see if it is working or not. So Junaid was teaching. Okay, replacing successful. Does it make sense? There's also reverse, I guess. N dot reverse. I say alert n dot reverse. असल में वहां से ही करना चाहिए. कहाँ से? Console से. You want defend? Let us see. Not working. Reverse. REVERSE. I think there is something reverse. Let us see, is a reverse there or not firstly. I don't remember it is there or not. I say it is. Give me the n dot reverse. No, it's with arrays, not with the strings. What the difference between strings and array is, if I say here, for example, I say n of 0. What do you say? Will it work? Will it work? It's working, right? N of 0, because there is index also with the string. So you can access each character of a string literally. Because J. Now I want to change it. I want to what? I want to change, I want to say n of 0 equals to y, for example, right? Control S. Now you want to give it n of 0. So I want to change J to y, right? It's not working. It's not. Strings are immutable. You can't change it. Like Java, strings are immutable. Okay? You can't change. But arrays, you can change. With arrays, you can do a lot of things. With strings,
you can't do, you can't change. Once it's there, you can't change it like this. You can't change the characters. But if it is an array, for example, if we have an array, okay, for example, we have an array, like I say, AR of whatever equals to, then I say, for example, 12, then I say 45, then I'm saying Junaid here, also putting a string, so this is heterogeneous also happening, right? So arrays don't need to be of the same genre, like in C and C++ now. I'm having integers there, and then I'm having the string there. You can do that, okay? And I can say Munib or whatever, okay? Now I want to alert it, alert the AR, whatever that is. Okay, let me close this one. Let me close this one. Control S. Will it work? It's not working. Okay, maybe I will say here the box. Control S. It's still not working. Alert is not working. Why is not working? I got here. Let me put this in the console, because let me run it in a console. I say copy. I go here, and I say Control V. I got AR. Wait a second. I don't need alert here, right? I got AR this. Okay. Uncaught syntax error. What is the syntax error here? Exactly. I need what? Square brackets. I need what? I need like this. Okay. 12 comma 45 comma I say Junaid. Right? Now it's working fine. Now it's working what? I gave actually wrong syntax. I use it in a C syntax. It's not C++ syntax. Not gonna work here. The syntax is like that. AR equals. Then put up what? Not curly braces, but what? Square brackets. So square brackets, then give it a go. Now if I want to change AR of 0 equals to, say for example, Munib. Now you see, I want to do what? If I say AR now it's Munib there. You can change the string, you can't change. In arrays, you can. Even if I say, for example, like this, what is the size of this? AR dot length. If I say AR dot length, okay, this is 3, right? Now if I say AR of 10 equals to Basirat, what will happen? Will it work? Will it work? Because I am saying index is only up to 3, but I am giving at what index? हमारे पास size क्या है? देखा रहा हूँ. It will work. It will, because here arrays are dynamic. What will happen to the other guys in between? Will it be at the number 4 or it will be at 10? It has to be at number 10 because I gave the index 10. So what will happen to the others is they will be empty. Now if you give it a go, you see empty into 7. You see the other boxes are empty. Okay, because I gave it 10. So 0, 1, 2 and up to 10. Then 10th is the Basirat. The rest are what? Getting my point? So arrays you can do. Arrays are very flexible here. They are heterogeneous. In a heterotype, you can put any type there, right? Number one. Number two, you can have empty spaces in between. They're dynamically created. You don't need to create a size. Yes, one thing is there that you don't have to put up a curly braces here, okay? Like we do in a C++ and Java, right? And we don't do like this. We do it like this way. AR equals, then in square brackets you put up whatever you have. And you can put up, increase the size, you can decrease the size, and whatever you want to do, you can do that with the arrays, not with the strings. Okay, and there are a lot of methods. You can do it with the arrays. Okay, you can say AR dot, and you see all the methods we have here, right? Just try to play with these things. Okay, okay. There's one more thing I want to teach here is what is called as literals. How to print
things in a better way. Okay, we use backticks for that in the JavaScript. We use backticks. So what is backticks? You know what is backtick? You don't know backtick. Really? You never heard of backtick? Have you used it in the keyboard? Why is the backtick on the keyboard? You don't know backticks. You don't know back. You have never heard about backticks in a keyboard. Really? Are you guys playing or you really don't know? Yeah, absolutely. You must be knowing this. So don't worry. So what we are saying is if I have to print, for example, something. For example, I go here. See, just tell this is a simple thing as it is. I'll just close these two. Okay. Go. Khatam, it's Bismillah. So what I'm saying is we got for example and don't use name, NAME. It's kind of a keyword here. So don't use name is equal. Say n is equal to say for example, Junaid. I already know one name. Maybe class is say for example MCA. Everybody with me? Nobody's gonna talk from that side. Everybody concentrate. Maybe fee. Maybe roll number. Also don't use class, huh? Yes, use class. Roll number equals to say for example 7. I don't know what. Maybe fee is submitted. Fee is what? Submitted. You have to put in the quotes. Okay? Double or single doesn't matter. Control S. Now I want to print all this information. How are you going to do it? I want to put it on all in alert. How you do it? You say firstly double quotes, then you say your name equals to, then you need some space, you do it here, then you concatenate it with what? N, but we do it a better way. Then you're going to concatenate it with some class space, class equals to, then concatenate with the class, whatever that is there, concatenated with what? Roll number equals to, then concatenated what? Roll number. Then I need to say what fee, huh? Space fee is. Then I say plus, and I do what? I do fee, but in a double quote. So no, we can do this like this, fee. Okay. Then say terminator, control S. Why I need break? I want to say a single line. Your name is, we can do it if double you can do it. But I don't want to teach breaks. I want to teach something else. So this is kind of a complicated. A lot of double quotes, a lot of concatenation operators, right? We don't do this way. We do it a different way because we are in a modern JavaScript. So we use backticks and we use the placeholders. Like we use the percentage D, percentage F in our C. We use same way here. Everybody with me on this side? So how we do the same thing? Whatever the information was on the top, but in a little better manner. Not using double quotes all the time. You see double quote, double quotes. Then concatenate plus 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 plus. And this doesn't make any sense. Okay. So I use alert. Then I use the backtick. I use what? Backtick is on top of the tab key. Okay. It's like this. Backticks on top of the tab key. Now you say your name. Use space. You don't have to use concatenation. You need a placeholder. Placeholder is for the money sign, that is the dollar, and put up in the curly braces what you want to put there. I want to put there what? Name, n, okay? Then no concatenate operator at all. It will stay on in one string, and those placeholders will show what you want to show there, right? And like we use percentage D, percentage F in a C. Same way. Class equals to, because what I want to show here, so I use dollar and in curly brace I say CLS, whatever the variable name was. Then okay, roll number equals to dollar sign and a curly brace what? Roll number. And then fee is submitted or not submitted. Then I use dollar sign and curly brace fee. It's a little simpler,
than what we did here. Okay, so एक ही string है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक backticks के अंदर है ना? It is in the backticks, and wherever you want to print some variable, use dollar in the curly braces, whatever you want to print. Simple as that. Rest your whatever you want to say. Rest आपकी string है, और जहां आप कोई variable print करना चाहते हो तो वहां dollar और curly brace. Simple syntax, right? Okay. Now, if I just close this upper one, Control S, इसको छोड़ा करेंगे अपना, वापस लाएंगे, ठीक है ना? Okay, click me. Okay, no, this one, this is the, so it's exactly doing the same thing. P is submitted. This is doing the same job, right? एक और चीज पे सीखते हैं आज, that is equal to versus double equal to versus triple equal. Okay, एक होता है equal to means assign. A equals to 4, 4 डालो A के अंदर. Now if I say A double equal to 4, what does that mean? Comparison. What was triple equal to here? Exactly, very good. So that means if I have, for example, like, let me go to the console. Nice, nice. So what does that mean? Data type check करना है. Like for example, I say 1 equals to 2. What will you answer? So you can't assign 1 equal to, you need a variable for that. If I say 1 double equals to 2, so comparison false. It's not equal to 2. If I say 1 double equals to string 1, it's true. It's what? It is true. Yes, here it is true. Because 1 is on this side, 1 is also on this side. This one was a number, this one was a string. But it is still true, the same. But if I want to say कि भाई data type के साथ सिर्फ content ही नहीं, बल्कि क्या, then I use 1 triple equal to quotes 1. Now this will give the false. Because it's not only checking the content, it's also checking what? Data types. Okay? Nice. That's all for the JavaScript here. You tell me one thing. Do you have some class? इसके बाद किसी क्लास है? वहाँ सब नहीं होती अभी? इसे सुबह ही दोनों? Okay, ठीक है. Give me 10 minutes more to this, huh? Okay. हमें कब तक होती है क्लास अपनी? अभी हमारे पास 10 मिनट है अपनी. Okay? So now what we say here is, I go to the HTML. Yes, there are a lot of things. Now we are trying to build a responsive website. In the rest, we show सीधे बैक नीचे में पूरा डिसिप्लिन सी responsive website. क्यों कि भाई साहब आप साइट जो आपकी है वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए. जो आपकी साइट है वो मोबाइल फोन में भी चलनी चाहिए, वो आपके टैब में भी चलनी चाहिए, लैपटॉप पे भी, बिग स्क्रीन पे भी चलनी चाहिए. तो उसका मतलब ये है, इसके आगे चल रहे हैं. We only saw the media query, right? That was the first thing to do. But main thing उसमें ये है कि we use relative fonts. What do we use? We use what? We don't use the, अगर हम static fonts लेंगे, भाई इसका 16 पिक्सल दे दो, इसका 14 पिक्सल दे दो, तो वो जाहिर सी बात है मोबाइल फोन पे चलाओगे तो वो जो बड़ा दिखेगा ना, वो तो स्क्रीन से गायब हो जाएगा, उसमें कुछ आएगा नहीं. So what we do is we give relative fonts. What? उसमें हमारे पास एक M आता है, एक rem आता है, and also we go for viewport. viewport का मतलब है, अगर हम कहेंगे display viewport, that means this whole screen जो viewing area है. लेकिन जो हमारा ब्राउजर का viewport है, so चाहे वो मोबाइल फोन का स्क्रीन हो, जितना ब्राउजर उसमें खुलेगा उसे हम कहेंगे viewport. क्या बोलेंगे? यानी कि मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई मेरे को तो हाइट 50 पिक्सल यहाँ से दे, 150 पिक्सल यहाँ से दे, क्योंकि वो फिट नहीं होगा ना फिर उसमें. जब अगर मोबाइल में फिट नहीं हुआ, अगर हमने लैपटॉप के लिए बनाई, अब आप बड़ी स्क्रीन पे डाल रहे हो, वहां पर भी कुछ छोड़ा दिखेगा ना. तो मुझे कहना चाहिए व्यू पोर्ट, न कि फिक्स्ड हाइट एंड ब्रेड्थ. आर यू विद मी? ट्राई टू लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. आई एम सेइंग कि आपने लैपटॉप के लिए अपनी साइज बना दिया ना, अब ये फिट आ रहा है, अब आप बड़े स्क्रीन पे डाल रहे हो, आपने कहा था हाइट 50 पिक्सल, तो यहाँ इतने बड़े हाइट है, वहां तो वो छोटा दिखेगा ना. तो इसलिए मुझे बात नहीं करनी चाहिए पिक्सल्स की, फिक्स्ड
फिक्स्ड इनकी, बल्कि मुझे बात करनी चाहिए व्यू पोर्ट की। किसकी? व्यू पोर्ट मीन्स ब्राउजर एरिया। अब वो ब्राउजर एरिया आपके मोबाइल फोन का है, वो ब्राउजर एरिया आपके, अगर मैं कहूंगा 50% ऑफ द व्यू पोर्ट, सो इट विल टेक हाफ द साइज ऑफ व्हाटएवर द ब्राउजर साइज इज। चाहे वो मोबाइल फोन है तो उसका हाफ आएगा, चाहे वो ये है उसका हाफ आएगा। दिस इज वन थिंग। देन आई यूज टू टाइप्स ऑफ fonts, one is the M, one is the rem, one is the M, EM. I don't use pixel, I don't use what? अगर आप पिक्सल इस्तेमाल करते हो, क्या करते इस्तेमाल, वो फिक्स्ड साइज हो जाएगा, तो फिर जब आप दूसरे पे चलाओगे तो वो उसी साइज का आएगा। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो वी गिव व्हाट, RAM and M, and using the media query we can make a full responsive website। हमारे पास तीन ही चीजें लगेंगी responsive वेबसाइट बनने की। एक मीडिया क्वेरी, व्हाट वाज मीडिया क्वेरी डूइंग? यस, वी सी द स्क्रीन साइज ना, तो उससे पता चलता है कि कौन सा हमारे पास है, उस हिसाब से अब आपका CSS चलता है, ठीक है ना, उस हिसाब से हम फॉन्ट लगाते हैं, नेविगेशन चेंज करते हैं वगैरह। सो मीडिया क्वेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने परसों पढ़ा। Second thing is we use the relative fonts. Maximum times we use rem, not the M. We see the difference today. What difference, right? Try to understand that. And the third thing we use is a viewport height or width. We don't use the fixed height or मेरे को इमेज लगानी है, मैं इमेज लगाऊंगा व्यू पोर्ट के हिसाब से। तो भाई साहब जो व्यू पोर्ट की है, मुझे फुल स्क्रीन चाहिए इमेज, ठीक है, जो मैं डिस्प्ले इमेज लगाऊंगा मुझे वो फुल स्क्रीन चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बड़े स्क्रीन पे लगाया तो वो इमेज इधर छोटी सी आ गई, या छोटे स्क्रीन पे आ गया तो वहां कुछ दिख ही नहीं रहा। जो भी स्क्रीन का व्यू पोर्ट का हाइट है, मैं कह रहा हूँ फुल व्यू पोर्ट का हाइट, अब वो कोई सा भी स्क्रीन हो, वो उसके फुल हाइट में स्ट्रेच होके आ जाएगा, ठीक है ना, बात में आ रही है। सो कुल मिला के तीन चीजें मेरे पास होंगी, क्या क्या? व्यू पोर्ट एच और व्यू पोर्ट डब्ल्यू मींस विड्थ, और व्यू पोर्ट यानी कि व्यू पोर्ट के हिसाब से हाइट एंड विड्थ एडजस्ट करो। नंबर टू, फॉन्ट्स एम से करो या रैम से करो, पिक्सल मत करो कभी। और तीसरा, मीडिया क्वेरी, जिस हिसाब से आपका डिवाइस होगा उस हिसाब से आपका CSS चलेगा। तो अगर आपको ये चीजें आ गई तो आप अपनी साइट को रेस्पॉन्सिव बना सकते हो, यानी कि आप अपनी साइट को कहीं पर भी चला सकते हो, ठीक है जी। देखिए, इसको समझने के लिए एम और एम करते हैं। एम मींस एक्चुअली एलिमेंट, रैम मींस रूट एलिमेंट, ओके। दीस आर बोथ रिलेटिव फॉर्म्स। रिलेटिव बोलते हैं एज कंपेयर टू। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक, I got one div tag here. For example, I got a div tag here, okay? And I want to name it something like, if I say hash HEAD head, okay, it's going to be div with the ID head, right? ये मेरा इसमें है, और इसमें एक h1 tag है। क्या मेरे पास है? I got one h1 tag which is saying heading 1, and I got one paragraph tag maybe. Okay, in this I got one p tag. Okay, then I put some text in it. Loaded. इसका क्या था? Alt Z आ रहा था इसका? Yes. Control S. ठीक है ना? If you want to see it on a screen, you see it's like this. Okay, heading 1 and lower S. If I go here, I'll just open up the Chrome. Okay, copy it. क्लास में फोन इस्तेमाल नहीं करते, आपको इतना पता नहीं है। कंट्रोल V. You don't know this thing? घर से हो या बाहर से हो, you should talk outside. You can't use phone in class. Okay. Now this is my here something. Okay, whatever that is. Let me see it in the full screen. What's happening here? Okay, this is about actually this thing, huh? Let me close this. This is my header 1, and if I say Control Shift and J, yes, console, I need console, and I say elements. Okay, now look here. Now if I select this, and I go to the heading 1. Okay, I got the head one. This is the heading 1, right? This is the, not this one. I go to the div tag and head, and in that I have the h1. I go to the h1. Now see the style. Firstly, it is block, and it's saying font size is 2M.
2m. So what does that mean? And if you say computed, here computed with 30, if you say computed and the font size with 32 pixels, so why from it come? We understand the m by, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आपका HTML का फॉन्ट होता है, जो आपका HTML का फॉन्ट होता है बेसिक, जो बेस फॉन्ट आपका है HTML का, वो 16 होता है। कितना होता है? सो 16 होता है। और आप कह रहे हो कि जो आपके ये हेडर वन है, इसका आपने कितना रखा है फॉन्ट साइज? मींस डबल द डिफॉल्ट साइज। ठीक है, तो जो भी आपका डिफॉल्ट साइज होगा, ठीक है, उसका डबल, उसका आप डिफॉल्ट साइज आप करोगे एज पर योर मीडिया क्वेरी, एज पर द डिवाइस, एज पर द जैसा डिवाइस होगा वो फॉन्ट मेन फॉन्ट का साइज है, बॉडी का या HTML का ही फॉन्ट जो 16 है, उसको उसी हिसाब से एडजस्ट करोगे। आपका बड़ा स्क्रीन है उसमें बड़ा रखोगे फॉन्ट, छोटे को छोटा रखोगे। और जो बाकियों का फॉन्ट आ रहा है, जैसे H1 का फॉन्ट आ रहा है, वो मेरे पास आ रहा है कितना? 2m, यानी डबल द फॉन्ट ऑफ ए मेन फॉन्ट, डबल द फॉन्ट ऑफ द। अगर मैं कहूंगा भाई साहब मेरे को इसको 3m करना है, क्या करना है? आई कैन यूज द स्टाइल, देन आई कैन यूज व्हाट। लेकिन अगर मैं इसको लगाऊंगा पिक्सल, भाई इसको 20 पिक्सल दे, 50, वो फिक्स्ड हो जाएगा फिर, तो उसमें आप फिर कुछ कर नहीं पाओगे ना। जैसे आपने बड़े स्क्रीन के लिए कहा आपको मेरे को 50 पिक्सल चाहिए, 100 पिक्सल का चाहिए हेडिंग वन। अब आप ये मोबाइल में चलाओगे, वो वहां भी 100 पिक्सल आएगा, वहां कुछ दिखेगा नहीं, वहां एक लेटर दिखेगा। ठीक है, तो हमारा इसमें स्टाइल बन चुका है कि भाई साहब जो मेरे हेडर का फॉन्ट है वो फिक्सड नहीं है, वो 2m है। उसका फॉन्ट साइज क्या है? ये जो हेडर का, अगर आप देखोगे इसका स्टाइल देखोगे इसका, इसका हेडर का, वो 2m है, उधर से ही है। लेकिन अगर आप अपने स्टाइल के अंदर CSS के अंदर फॉन्ट साइज इसका रखोगे फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल, 50 पिक्सल अपने डिवाइस के हिसाब से, सो इट वोंट हेल्प यू टू मेक इट रिस्पॉन्सिव। सो पहला जो है बेस फॉन्ट वो 16 पिक्सल है यहाँ पे, लेकिन उसको मैं मीडिया क्वेरी के हिसाब से क्या करूंगा? चेंज एज पर द डिवाइस। और जो मेरा हेडर है इसका मैं CSS चला के यहाँ पे अलग फाइल में इसमें CSS है हमको यहाँ पे। अब मैं यहीं पे इसका लगाता हूँ CSS। हमारे पास है CSS फाइल, यहाँ पे लिंक है करके, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना, इसमें जावास्क्रिप्ट है ना ये। तो अगर मुझे इसमें CSS लगाना होगा तो क्या करेंगे? स्टाइल, वेरी गुड। क्या एक ही बच्चा बोल रहे हैं, बाकी क्या सो रहे हैं? अगर वहीं पे ना इंटरनल करना है ना, या तो दूसरे फाइल में, या क्या करोगे आप हेड के अंदर करोगे, दैट्स कॉल्ड इंटरनल, या इनलाइन भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं किसको पकड़ना चाहता हूँ? H1 को। ठीक है, H1 किसके अंदर है पहले, या अगर सब H1 को पकड़ने दो, सब H1, सारे H1। ठीक है, ये सब H1 को हो जाएगा। सो H1 को मैं फॉन्ट साइज रखना चाहता हूँ, फॉन्ट साइज आई वांट टू कीप इट 3m, मींस थ्राइस द एलिमेंट, थ्राइस द जो बेस फॉन्ट है उसका थ्राइस, उसका कंट्रोल S। सेंटीमीटर नहीं है, जो भी आपका वहां पे जो आपका फॉन्ट है तो 16 पिक्सल है, डिफरेंट पिक्सल्स। परसेंट अलग चीज है, अगर आप परसेंट करोगे दैट इज डिफरेंट, परसेंट डिस्प्ले के हिसाब से, यस। लेकिन यहाँ पे जो आपका बेस फॉन्ट है दैट इज 16 पिक्सल, हाउ मच? आप उसके हिसाब से आप 3m रख रहे हो, कंट्रोल S। नाउ इफ आई गो टू द क्रोम, if I go to the Chrome, this is my Chrome, right? Now I go to font size is 3m, it has changed now। ठीक है, जो आपका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज था वो कट लग गया, दैट इज गॉन। आपका स्टाइल के हिसाब से फॉन्ट साइज आ गया 3m। व्हाट विल बी द कंप्यूटेड? दैट विल बी 3 into 16, दैट विल बी, दैट इज 48 पिक्सल। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप इसके कंटेनर, इसका कंटेनर कौन है, इसका कंटेनर कौन है? div। अगर उसका फॉन्ट आप चेंज करोगे, फर्ज कीजिए आपने उसका फॉन्ट चेंज किया, आपने किसका हैश, नहीं हेड का फॉन्ट मैंने चेंज किया, फॉन्ट साइज मैंने इसका फॉन्ट साइज रखा से फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल, किसका? हेड का। तो अब देखते हैं उसका क्या हो जाता है, किसका? हम देखेंगे नहीं, हेड हो गया डिव का जो इसका पेरेंट था, किसका पेरेंट? H1 का। और दिमाग रख यहाँ पे, तो क्या बातें कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट हियर।
और गो आउटसाइड द क्लास। H1 जो है देखिए, H1 और P ये दोनों किसके अंदर आते हैं, इस div के अंदर, जिसका नाम हेड है, आईडी हेड है। मैंने उसका फॉन्ट साइज कितना रखा, 20 पिक्सल्स। और H1 का मैंने 3M कर दिया ना, सो 3M मींस थ्राइस द एलिमेंट, जो इसके एलिमेंट का जो 16 था उसका थ्राइस था। अब मुझे लगता है कि अगर मैंने हेड का 20 कर दिया है, क्या क्या हेड का, सो कंट्रोल S इट एंड गो टू द क्रोम एंड सी व्हाट्स हैपनिंग हियर। सो पहले बता मुझे, अभी अभी कितना आ रहा था मेरे पास, 40, अब 60 आ गया। व्हाट इज हैपनिंग, देखिए जो div था वो 20 पिक्सल था ना, वो क्या था, 20 पिक्सल, और उसका कंप्यूटेड फॉन्ट साइज कितना आएगा, 20 पिक्सल। ये सब कंटेनर है ना, इसका आ गया 20 पिक्सल। अब आपने 3M कर दिया, क्या कर दिया, सो 3M किसका कर दिया आपने, हेडिंग का। सो इसका फॉन्ट साइज कंप्यूटर कितना निकलेगा, 3 into 20 नाउ इट विल नॉट, सो इट विल नॉट, क्योंकि पहले जो साइज था फिक्सेड वो HTML का था 16, div का हमने नहीं किया था, सो div का वजूद में ही नहीं था, ठीक है। ये ले रहा था टू द एलिमेंट, जो एलिमेंट इसका था कंटेनर, मेन कंटेनर HTML 16 या बॉडी, उसका ले रहा था 16 into 2 into 3, दैट इज 48। नाउ जो इसका इमीडिएट कंटेनर है वो कौन है, वो div है, ठीक है, हेड है, वो कौन है, हेड है, दैट इज div, है ना, div का नाम तो हेड है ना। तो उसका साइज जब हमने 20 रखा, अभी इसके हिसाब से ट्राइस कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको पैडिंग रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, I want to show you why we use rem not m. Mostly we use m for special cases and rem for everything. So why we do that, I want to make you understand that thing, if you are with me. If you are not with me then nothing will happen, okay। मैं यहाँ पे इसकी पैडिंग चेंज करना चाहता हूँ। H1 जो मेरा है फॉन्ट साइज कितना है 3M, एंड आई से पैडिंग, पैडिंग रखो इसको, से फॉर एग्जांपल 2M फॉर एग्जांपल, ओके। नाउ अगर आप यहां जाओगे, इस H1 की पैडिंग अब देखोगे, मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट इसकी 120 आ गया पैडिंग। अगर मैंने 2M किया था, अगर मैंने क्या किया था, देखिए यहाँ दे, यहाँ दिमाग दे, अगर मैंने 2M किया था, कितना किया था, मींस ट्वाइस द रूट, रूट रूट डिव है इसका, रूट नहीं, ट्वाइस ट्वाइस द एलिमेंट है, इसका एलिमेंट कौन है, डिव। डिव का मैंने कितना साइज रखा, मैंने डिव का साइज रखा था फिक्सेड, कितना 20 पिक्सल, 20 पिक्सल रखा था। H1 ने किया थ्राइस 3M, थ्राइस द एलिमेंट, थ्राइस द एलिमेंट, थ्राइस इनटू 20 इज 60, ठीक है। ये देखिए 60 पिक्सल आ गया वो। देखिए पैडिंग भी तो होना चाहिए, पैडिंग तो 40 ही होना चाहिए ना, पैडिंग 120 आ गया। देखिए क्या होता है, इसने, यस एग्जैक्टली, इसने इस फॉन्ट का किया, इसने क्या किया काम, यहाँ ध्यान दे, कंसंट्रेट, वरना समझ नहीं आएगा, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस, ठीक है। यहाँ देखिए आप, चूंकि हेड का 20 है, जो फॉन्ट साइज है उसने 3 into 20 किया, कितना हो गया, और जो पैडिंग है उसने फॉन्ट का किया, सो ये कैस्केड होता जाएगा। सो एम इज वेरी कंफ्यूजिंग, ये कैस्केड होता जाएगा, जो ही ये आगे चलेगा ये इसको अपना कंटेनर लेगा, ये इसका डबल कर देगा, वो बंदा इसका, ठीक है। अगर हम लिस्ट बनाएंगे, अगर हम लिस्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उसमें सब लिस्ट बनाएंगे, उसमें सब लिस्ट बनाएंगे। हमने कहा 2M, हमें लग रहा था कि भाई ट्वाइस कर दो, लेकिन ये इसका ट्वाइस करेगा, ये इसका ट्वाइस करेगा, और ये बड़ा बड़ा होता जाएगा, गेटिंग पॉइंट। इसलिए हम रैम करते हैं इस्तेमाल, ये देखें आप, ये देखें आप यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आई गॉट हियर वन लिस्ट, यूएलसी करते हैं ना, अनऑर्डर लिस्ट, देन आई वांट व्हाट, li, then I say dollar, okay, into
4. ओके, कंट्रोल Z, LI डॉलर तो मैंने दिया, लेकिन LI, क्योंकि LI इसके साथ किया ना, मैं ये अलग रखना था मुझे। कौन should I give this thing into 4? That it's not gonna work. I am saying मुझे लिस्ट ना चाहिए कितने, so let me see LI into 5 whatever. So ये 1 है, ये 2 है। डॉलर इंक्रीज करता ना हमें साइज, ये ना 1 2 3 खुद लिखता हूँ। I forgot how to write the shortcut. Anyways, 1 2 3 4 5 आगे मेरे पास है। कंट्रोल S, इसको देखेंगे सिंपल आ जाएगा पहले इतना। अगर आप देखोगे इसको, क्लोज दिस, 1 2 3 4 5। अब मैं सब लिस्ट करता हूँ। क्या करूंगा, आई जस्ट कॉपी दिस होल थिंग। भाई कॉन्सेंट्रेट करें वरना फजूल है ये। इफ यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग इट इज गेटिंग रिडिकुलस। सी आई एम गेटिंग हियर इनसाइड दिस सब लिस्ट। ओके, और इसके अंदर मैं ये जो 3 है इसके अंदर एक और सब लिस्ट करता हूँ मैं, यही चीज, कंट्रोल एस। सो इट इज सब लिस्ट के अंदर सब लिस्ट, ठीक है ना। सो इट इज लाइक दिस, ठीक है, इसका सब लिस्ट। अब इस 3 का और एक सब आ गया, ठीक है। अब मैं यूएल को 2m करूंगा। यूएल क्या करूंगा, आई जस्ट वांट द स्टाइल ऑफ यूएल। यूएल का जो फॉन्ट साइज है, यूएल का क्या है, आर यू गाइस विद मी, दैट इज 2m। थोड़ा दिमाग दो, 5-10 मिनट करो and just concentrate what I'm doing. You will not learn these things in the classes, you know, in the university classes basically, but if I am giving you, so concentrate. When I say control S, you go here, where is it, Chrome? What's happening? See, 1 2 3, this is bigger and this is 2 bigger, because M does what, it takes immediate जो इसका ऊपर था वो एज ए पेरेंट, ये उसका 2m करेगा। जो इस सब ने इसने इसका किया, इसने इसका किया, so we say bro we don't want that. Yes, we use M because M आपका हमेशा जो इमीडिएट है उसी का डबल करेगा। तो जो आपने लिखा 3m 4m जो भी आपने लिखना चाहते हैं उसका डबल करेगा, इट विल बी रिलेटेड टू दैट। लेकिन जो ही आप आगे आगे जाएंगे, ये इसको लेगा, ये इसको लेगा, ये इसको लेगा, so we don't want that. We want कि भाई साहब जो भी मेरे पास इसके पास सारे हैं ना उनका 2m होना चाहिए, यानी जो रूट एलिमेंट है उसी का, जो रूट एलिमेंट है। So that is why we say rem, rem. Rem always takes root element. It doesn't take the immediate neighbor. Immediate neighbor नहीं लेता, वो क्या लेता है? So I don't say 3m. I say what? I say rem. Whatever that is, I say what? Whatever I do, I say rem. I don't see, and this will fix my problem. If I now see it in the browser, it will be twice or thrice। जो भी था बंदा, ये thrice बन गया था रूट के, यानी कि 16 रूट है तो उसका थ्राइस बन गया था, ये उसका ट्वाइस बन गया था। अब आपको क्या करना था, आपको रूट का फॉन्ट फिक्स करना है एज पर द मीडिया क्वेरी जिस तरह से डिवाइस है। फिर उसी हिसाब से आपको डिवाइस के हिसाब से, अगर डिवाइस का छोटा है तो आपका रूट मान लीजिए 5 ही पिक्सल है, उसका ट्वाइस 10 पिक्सल आएगा। अगर आपका डिवाइस ये बहुत बड़ा स्क्रीन है तो आप उसको रखोगे 100, फॉर एग्जाम्पल 100 पिक्सल, सो उसका ट्वाइस आ जाएगा। सो बाय दैट वे यू विल फिट इट एवरीवेयर, दिस विल फिट इट वेयर एवरीवेयर, ठीक है। इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे हम 5-10 मिनट, यू नो, बाय टुमारो, वेयर वी सी व्यू पोर्ट हाइट एंड व्यू पोर्ट विड्थ। कुल मिला के कितनी चीजें आपको करनी है रेस्पॉन्सिव के लिए? नंबर 1 ठीक है ना, सेकंड viewport height, viewport width. Number 3rd, use RAMs. Don't use M's often. We use M's for special purposes, but use RAMs. Okay? Getting? We can also use some percent size also, but RAM is better than all these. So that's all for today. Attendance, and you can go. Sit down. Don't get up.